Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, that is correspondence with the debenture holders. Now, in the previous video, what we have learned, correspondence with the shareholders. In SP, you have very small chapters and very easy chapters, easy to score marks also. The only thing is you should be able to know the you should be able to understand the concepts clearly. Okay, so your concept का clear होना बहुत ज़रूरी है. Otherwise SP is very easy subject as compared to the other subject, and also it is a scoring subject. Content and writing skills, writing practice is very important over here. Whatever questions are there in the textbook, you should answer them, and you should practice writing them. Only then you will be scoring good marks. अदरवाइज व्हाट यू डू, यू ऑल स्टडी ओवर हियर, और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम में आप लोगों को लगता है कि हम लोग लिख पाएंगे, लेकिन आप लोगों को 100% में से सिर्फ 50% ही याद रहता है, और लिखते टाइम वो सिर्फ 30% आ जाता है. तो इसके लिए माई एडवाइज इज यू ऑल प्रैक्टिस एवरी डे द लॉन्ग आंसर्स. सी इफ़ यू प्रैक्टिस लॉन्ग आंसर्स देन ऑटोमेटिकली स्मॉल आंसर्स भी आ जाएंगे. तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो. Then these three topics, that is correspondence with the shareholders, correspondence with the debenture holders and correspondence with the depositors, ये तो तीन चैप्टर्स है और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब सेम टाइप के है. ओनली थिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस इज डिफरेंट ओवर हियर, द पर्सन इज डिफरेंट, द सोर्स जो फाइनेंस देता है वो पर्सन डिफरेंट है. पहले इसमें क्या था कि देयर वाज अ शेयर होल्डर, नाउ इट इज डिबेंचर होल्डर. सो लेट्स start the chapter, that is correspondence with the debenture holder. Okay, now what who is a debenture holder? Debenture holder हम लोग क्या क्या है वो. So here debentures, why we use to raise our funds by issuing debentures. Okay, now debentures are what? They are the borrowed capitals of the company. Debenture holders are the liability of the company. They are also known as the creditors of the company. Okay, so here debentures, as we consider shareholders are the owners of the company, in the same way debentures are the creditors of the company. They are safe and secure kind of a capital. Okay, now debentures are issued for a specific period of time, and it carries a fixed rate of returns. Okay, now when it is for a specific period of time, company secretary has to communicate with the debenture holders also. Okay, it should give all the details which are related to the debenture holder, wherein the creditors, the debenture holders are interested, like for example the financial statement of the company. If company has issued the interest, then they have to intimate to the debenture holder. So all these details should be intimated to the debenture holder. So let's see what are the precautions that a company secretary has to take when they want to correspond with the debenture holders. Now before appointing a debenture holder, before corresponding with the debenture holder, a company cannot issue debentures to more than 500 people. Okay, if they want to issue debentures to more than 500 people, then they have to appoint a debenture trustee who plays a very important role. They will help to protect the interest of the debenture holders. Okay, so जब debenture holders को 500 से ज़्यादा हम लोग इश्यू करते हैं तो debenture trustee को अपॉइंट करना रहता है. एंड ऑल्सो सेक्रेटरी को बहुत सारे सिचुएशंस रहते हैं wherein he has to communicate with the debenture holder. So let's see first the precautions. Okay, precautions to be taken by the secretary while corresponding with the debenture holder. Now debenture holders are what? They are the creditors of the company. So the secretary should be very cautious, very alert while corresponding with the creditors of the company, while corresponding with the debentures of holders of the company. So first thing is politeness, that is courtesy. Now when the debenture holders are also known as the creditors of the company, they should be given respect. Okay, they should be
While secretary corresponding with the debenture holder, they should be given due respect. The tone of language in the letter should be cautious. Okay, rude and harsh language is strictly avoided over here. He should be very polite while writing the letter to the debenture holder. Next is prompt response. Now, if there is any queries or any complaints of the debenture holder, they should be promptly replied without any delay. Okay, there should be prompt reply from the debenture holder. Legal provisions. Now, secretary should follow the statutory provisions of the Companies Act 2013. Okay, and other relevant laws while corresponding with the डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर को जब लेटर्स लिखते हैं तो सेक्रेटरी को कोई प्रोविजंस दिया जाता है कंपनी एक्ट 2013, तो उसके अकॉर्डिंग उसने फॉलो करके द लीगल मैटर्स ही शुड फॉलो एंड ही शुड कॉरस्पॉन्ड विद द डिबेंचर होल्डर. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी. Transparency plays a very important role while corresponding with the debenture holder. They should maintain greater transparency. Okay, whatever information or whatever statements, if a debenture holder want to have a look, then they should be disclosed by the secretary of the company. Okay, there should not be any fake information. All the information whatever are there, it should be true and real facts of the company affairs. Next, conciseness. Okay, the letters of the debenture holder should be concise. Okay, it should not be a very big letter, because debenture holders are the creditors, they are not interested in other thing. So whenever they write the letter, it should be very concise, it should be brief, short and up to the point. Okay, unnecessary or irrelevant information should not be there, it should be avoided. Then, precise information. Now, whatever information is provided in the letter, it should be precise and up to date information. No old data should be there, it should be factual and true information. Okay, secrecy. Now, while corresponding with the debenture holders, the secretary should maintain secrecy of the business. Okay, it should not disclose details which are very secret and related to the company while corresponding with the debenture holders. Image and goodwill of the company. While corresponding with the debenture holder, the secretary always try to maintain goodwill and create good image of the company in the minds of the debenture holder. Okay, now while corresponding with the debenture holder, the secretary should always try to maintain goodwill. Okay, and create अच्छा इमेज रखना चाहिए डिबेंचर होल्डर में, ताकि उसको कुछ सस्पिशियस फील ना हो, उसको कुछ ऐसे डर फील ना हो कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं. ही शुड बी वेरी, जो कंपनी है उसका इमेज हमेशा बरकरार रखने की सेक्रेटरी ने ट्राई करना चाहिए. Circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with the debenture holder. कौन से ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे सेक्रेटरी को डिबेंचर होल्डर से कॉरस्पॉन्ड करना पड़ता है. Now, following are the few circumstances under which secretary enters into correspondence with the debenture holder. फर्स्ट वन इज इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेशन अबाउट अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है उसके बाद उसका अलॉटमेंट किया जाता है. व्हेन दे रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर. नाउ जब उसका अलॉटमेंट होता है तो उसको इंटीमेट करना चाहिए कि दे हैव बीन अलॉटेड विद द डिबेंचर्स. ओके, देन informing about payment of interest. Okay, informing about what payment of interest through interest warrant or by electronic payment of interest. Okay, then letter for conversion of debentures into equity shares. अगर डिबेंचर होल्डर ऐसा चाहता है कि दे वांट टू कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर, देन लेटर शुड बी सेंड बाय द सेक्रेटरी. लेटर ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर वो रिडीम हो रहा है तो उसके बारे में भी लेटर सेंड करना पड़ता है. सो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशंस वेर इन कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू राइट अ लेटर टू द डिबेंचर होल्डर. सो विल सी ऑल दिस लेटर्स इन डिटेल.
First one is letter informing about allotment of debentures. When a debenture holder is allotted with the debentures, then the debenture holder gets the debenture certificate in exchange of this letter. Okay, so here the letter is very important. It will give all the details regarding number of debentures applied, number of debentures allotted, distinctive number of debentures, amount received, type of debenture, whether it is unsecured, secured, convertible, non-convertible, redeemable, non-redeemable, तो participating, non-participating, तो ये वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी डेट, सो ये सारे डिटेल्स वहाँ पे दिए जाएंगी. सो लेट्स सी हाउ द लेटर लुक्स लाइक. हियर first we'll write this. It is the same as you have written for the shareholders. Okay, Disha Industries Limited, registered office, Maharaja Complex, Panchvati, Karanja Road, Nasik. Okay, then CIN number. On the left hand side you have phone number, fax and reference number. Then on the right hand side you have website, email and the date. Okay, then afterwards the name and the address of the debenture holder, that is Mr. Vijay Mittal, 230 द्वारका करंजा रोड नासिक. ओके, सब्जेक्ट लिखना है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. ये लेटर्स भी आएंगे, डोंट टेक इट लाइटली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो यू शुड नो हाउ टू राइट अ लेटर, बिकॉज एसपी का मेन पढ़ने का मोटिव क्या है, दैट द पर्सन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, मतलब राइटिंग कॉरस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर. सो यू शुड नो हाउ टू राइट अ लेटर. ओके, then dear sir, in response to your application number, whatever application number is there, here it is DYI8013, dated 30th April 2019. I am directed by the board of directors to inform you that you have been allotted 100%, 10% non-convertible secured debentures of rupees 100 each. Okay, so 10% is what? It is the rate of interest. So here percentage लिखना important है. The tenure of the debenture is 5 years. So ये 5 years तक चलने वाले debentures है. These debentures are allotted to you as per the resolution passed by the board meeting held on 16th May 2019. As per the terms and conditions of articles of association of the company and the debenture trust deed. Okay, so ये लिखना है कि ये कहाँ कब डिक्लेयर हुआ, कौन से बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर हुआ, कौन कौन से कंडीशंस थे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एंड कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्ट में. सो डिटेल्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स आर एज फॉलोज. यहाँ पे डिटेल्स लिखने हैं और यू हैव टू मेक 5 कॉलम्स. फर्स्ट वन इज फोलियो नंबर. फोलियो नंबर क्या है? D90. नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाई किए थे? 100. ओके, एंड नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड, कितने अलॉट किए हैं? 100. डिस्टिंक्टिव नंबर फ्रॉम टू, फ्रॉम कितना है? 301 to 400. अमाउंट रिसीव्ड रुपीज़ 10,000. ओके, तो 10,000 डिबेंचर अमाउंट मिल गए. So the debenture certificate is enclosed herewith. Okay, thanking you, yours faithfully, for Disha Industries Limited. Sign Mr. अविनाश नतू, कंपनी सेक्रेटरी. तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, साइन ऑफ द सेक्रेटरी. ओके, इन एनक्लोजर में क्या है? डिबेंचर सर्टिफिकेट. इफ़ यू फॉरगेट दिस यू विल लूज योर मार्क्स. ओके, द एनक्लोजर्स भी लिखना है. डिबेंचर सर्टिफिकेट एनक्लोज किया जाता है when you allot the debentures. Next, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का जब पेमेंट होता है तब भी डिबेंचर होल्डर्स को हमें कम्युनिकेट करना रहता है. सो हियर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर कैपिटल इज अ लोन बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी. सो हियर दे गेट व्हाट? दे गेट अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. सो द इंटरेस्ट ऑन डेट्स, इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट. सो कंपनी pays interest. Okay, it pays interest by what? By sending warrants
warrant sent along with the letter or by the payment electronic mode of payment. Okay, so here all the details should be given, number of shares कितने हैं, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट है, टैक्स कितना डिडक्ट किया, नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे किया. सो फर्स्ट वी विल सी पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू इंटरेस्ट वारंट. ओके, इंटरेस्ट वारंट के थ्रू कैसे पे किया जाता है. फर्स्ट you will write the name of the company, that is Rolta India Limited, registered office, whatever the address is there that you write. Then CIN number is very important. Okay, so you all do one thing, remember one CIN number which you can use for any letter whichever comes. Okay, so ये CIN number एक याद रखना, otherwise in paper they will be providing you with the CIN number and every details of the company. Phone number, fax number, reference number. Then on the right hand side you have website, email and date. Then the person name of the debenture holder, Mrs. Diya Saluja, Aditi Apartment, MG Road, Mira Road, Mumbai. Okay, then subject, payment of interest on debentures. Dear Madam. ओके और हमेशा याद रखना जिसका नाम ऊपर है उस तरह से उसका सैल्यूटेशन लिखना. इफ़ इट इज़ अ मेल पर्सन देन राइट डियर सर. ओके, इफ़ इट इज़ अ लेडी नेम, इफ इट इज़ अ फीमेल नेम देन यू हैव टू राइट डियर मैडम. ओके, देन I am directed to inform you that the board of directors have passed a resolution in the board meeting held on 5th June 2019 regarding payment of interest on your 10% non-convertible debentures of rupees 100 each. Okay, ये सेंटेंस लिखना है. उसके बाद डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू यू एज फॉलोज. फर्स्ट here together all together 7 columns. Okay, फर्स्ट वन इज फोलियो नंबर ऑफ डिबेंचर्स. और ये कंफ्यूज मत होना शेयर और डिबेंचर्स के बीच. अगर वो शेयर होल्डर है तो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, अगर वो डिबेंचर, और हमेशा केयरफुली रीड करना जो लेटर आएंगे. डिबेंचर होल्डर को लिखना है या शेयर होल्डर को लिखना है या डिपॉजिटर्स को लिखना है, चेक करो एंड अकॉर्डिंग टू दैट राइट द डिटेल्स. ओके, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 100, distinctive number from 601 to 700, gross amount of interest 1000, TDS 10% on interest nil. Okay, net amount of interest 1000. इंटरेस्ट वारंट नंबर आ जाएगा यहाँ पे IW9646. The interest warrant is enclosed herewith. Please detach the interest warrant along with the perforated line. Okay, thanking you. Yours faithfully for Rolta India Limited. Sign Mrs. Simran Unecha, Company Secretary. Enclosed interest warrant. ओके, ये सारे डिटेल्स आपको लिखने हैं व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर टू द डिबेंचर होल्डर विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट. ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कैसे लिखेंगे. हियर payment of interest to electronic mode. Now what are the two types of electronic modes? ECS, NEFT, many other. Okay, etc. So Balaji Steel Limited, whatever registered office is there, that is registered office SR number 73, plot number 48, Balaji Tower, Mali Road, Pune. Okay, CIN number, phone, fax, reference, website, email and date. Then whom you are writing, Mrs. Amruta Dikshit, 3020 left Busari Colony, Kothur Depot, Pune. Okay, then subject, payment of interest on debentures electronically through ECS or NEFT. Dear Madam, I am instructed by the Board of Directors to convey you that the Board of Directors has passed a resolution in the board meeting held on 10th March 2019 finalizing to pay interest at 10% on redeemable debentures of rupees 100 each for the year ending 31st March 2019. Your company has complied with all the provisions relating to the payment of interest on debentures.
Details of the interest payable to you are as follows. Registered number C440, number of debentures 100, distinctive numbers from and to 601 to 700, gross amount of interest sorry 1000, TDS nil, net amount of interest 1000. Interest will be paid by electronic transfer, that is by crediting the said interest to your bank account as per the details provided by you to the company. Okay, तो ये कहाँ पे जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, या याद रखना इफ इट इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. Thanking you, yours faithfully for Balaji Steel Limited, signed Nikhil Dixit, कंपनी सेक्रेटरी. अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे इंटरेस्ट वारंट था तो उन्होंने क्या किया था, इंटरेस्ट वारंट को एनक्लोज किया था. नाउ दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक मोड, सो योर बैंक का मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज थ्रू पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. Next is what, when conversion of debentures into equity shares. Now as you know there are some convertible debentures also. So when a debenture holder, if he wish to convert his debentures into equity shares within a specified period at a specified rate mentioned in the term at the time of issue, so he can convert his debentures into equity shares. Okay, तो उस टाइम लेटर लिखना है कंपनी सेक्रेटरी को कि इन्फॉर्मिंग डिबेंचर होल्डर्स दैट ही शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू राइट अ लेटर. Krishna Electronic Limited, registered office, whatever, Krishna Sadan, Shivaji Chowk, Solapur, then CIN number, then here phone, fax reference, on the right hand side website, email and date. Then Mr. Mahesh Malpani, 20 Balaji Complex, Lakshmi Road, Solapur. Okay, 413018. Subject, conversion of debentures into equity shares. Dear sir, I am directed to inform you that accordance with the terms decided at the time of the issue of rupees of 1 lakh 10% fully convertible debentures, the debentures are due for conversion. Okay, in accordance with the above, a special resolution was passed by the shareholders in the extraordinary general meeting which was held on 25th May 2019 for approval of conversion of debentures into equity shares in the ratio of 2:1. As per your letter of option, you have been allotted 50 equity shares in lieu of 100 debentures. Okay, details of your holding after conversion are as follows. Folio number 465, number of debentures held 100, number of equity shares issued 50, distinctive number 501 to 550, शेयर सर्टिफिकेट नंबर 2219. सो हियर उन्होंने क्या किया है, 2:1 रेशियो के साथ, जहाँ जितना आप रेशियो लिखोगे वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे डिटेल मेंशन करना है. तो 2:1 मतलब अगर 100 शेयर है तो 50 इक्विटी शेयर मिल जाएंगे. तो इसके पास 100 डिबेंचर्स थे तो उन्होंने 50 इक्विटी शेयर्स उनको इशू किए. सो ड्यूली साइंड एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट विल बी एनक्लोज्ड हियर विथ. Debenture certificate will be null or void with effect from 25 May 2019. ओके, डिवेंचर सर्टिफिकेट अगर उन्होंने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया तो डिवेंचर सर्टिफिकेट को नल किया जाता है. इट इज़ नॉट वैलिड बिकॉज दिस डिवेंचर सर्टिफिकेट इज़ कन्वर्टेड, दिस डिवेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. तो यहाँ पे मेंशन करना है कि कब से वो लोग नल हो रहे हैं, मतलब कब से वो वॉइड हो रहा है. Thanking you, yours faithfully for Krishna Electronics Limited, signed Mr. Nitin Sharaf, Company Secretary, enclosing one share certificate. Okay, so these details when you convert debentures into equity shares. Next,
Redemption of debenture. Redemption of debentures are sent to the debenture holder at a time of redemption of the debentures for a specific, after a specific period of time. Okay. Now debenture redemption reserve fund is created for the company. Okay. कंपनी क्यों क्रिएट करता है? सो दैट दे कैन रिडीम द डिबेंचर्स. रिडीम द डिबेंचर्स मतलब उनके पैसे उनको वापस करना. दैट इज नोन एज रिडम्पशन. Okay, so here a letter is sent to them. So we'll see how a letter is sent. Swastik Marble Limited, registered office 30C, Achal Tower, Swastik Bhavan, Camp, Pune. Okay, CIN number, phone number, fax number, reference number, after that website, email and date. Mrs. Asmita Malpani, 25, Narayan Pet, Amruta Apartment, Pune. Subject: Redemption of debenture. Dear Madam, this is to inform you that 1,10% non-convertible debentures issued on May 2014 are due for redemption on 12th November 2019. Okay, according to the board resolution number 3462 passed at the board meeting held on 8 October 2019, debentures shall be redeemed out of the debenture redemption reserve fund of the company. Please arrange to submit enclosed debenture redemption form along with the original debenture certificate to the company on or before 3rd November 2019. Okay, so debenture redemption form should be arranged along with the original debenture certificate. Okay, and here date should be given, deadline should be given. On completion